नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है. Another 5 minutes I'll provide it. पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the journalists neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing now. The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties. अगर कोई भी उन्होंने order पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए आपका point मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say that exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है, एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी. बिफोर द 18th अमेंडमेंट
Before the 18th Amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. पढ़ ली 17th prior to 2010, before every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही. अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall, subject to law, hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted. Yes. Under the 18th Amendment. But it was brought back by 2007 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the Constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हम साहब उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का. वो एक उनके सेक्शंस में है. तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए. देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल, एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect. इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Mazaaq Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body it is performing that function. So under Article 219 any act 220 भी पढ़ लें. हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. प्रोवाइजो नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो
सुप्रीम कोर्ट है, आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, ठीक है, तो यू कांट, आई मीन आईजी पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता, उसको सुनना लाजमी है। सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by election commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As well. 220 is not with regard to functions, is regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार है। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers it may not be able to carry out its functions.